अ, क्या क्या कहेंगे उसको, अट्रैक्ट्स यू। यस, यस। उस समय हमारे भगवान सब वॉकिंग में जाते हैं घूमने के लिए। यू कैन से आल्सो दिस इज सर, द टाइम ऑफ आई वॉकिंग एम गॉड। वेरी स्पिरिचुअल एंड But आध्यात्मिक I कह am सकते हैं। surprised कि you are wake up right now in you are living in Delhi and you are wake up 4:30. I am so 4:30 now. surprised. No, sir, 4:30 now. Today I wake up 4 o'clock. अरे बाप रे! जब मेरा क्लास होता था 4:30 का तब हम लोग 4 o'clock उठते थे सुबह सुबह। Sir, that's why I joined your class 5:30 right now. But once I want, मतलब एक बार मैंने लीव किया, देन मैंने उसको फिर छोड़ा, फिर मैंने अगेन दोबारा फिर करा, तो आप थे वहाँ पे। नहीं वैसे एक्चुअली क्या है ना बिल्कुल। कि मैम जो है हमारे यूएसए से जो मैम है शी इज ज्वाइन द क्लासेस for maybe in regular basis, but she has also lots of work. She is also working now. Yes, yes, sir. I can But understand. Yes, sir. we are not forcefully कि ma'am, but It's ma'am is not also enjoy possible the for classes. everyone to कि they get up early in the morning. My little daughter, age 10 years, she also wake up with me. Mama, I want to get up with you early in the morning, 4 o'clock. And in the summer vacation, she gets up early in the morning every day, 4 o'clock, and meditate with me, With the sir. okay. 4 o'clock, and she get up early in the morning and ready at 6 o'clock, नहा धो के एकदम रेडी होके 6 o'clock पे बैठ जाती थी। आई एम वेरी सरप्राइज सर। Oh, good, very good. So you have also a little bit question happiness movement and of your life, happiness movement of your life. This is the simple question for you. So you are सर working दिस on which stream? You are working in which No, stream? sir, at present time I am not working, but before COVID I am working in a college, in a B.Ed BTC college, sir. Okay, So I teach B.Ed students. okay, good, very Yes, good. sir. I am MA in education and English, but my speaking is poor. My literature is very strong. My poetry section and prose section is strong. But sir, I am weak in somehow grammar in and speaking poor हो गई, क्योंकि सर इतने सालों से मेरा छूट गया। मेरा 2002-3 में मेरा एमए हुआ सर। उसके बाद में I get up marks 55% marks in English, sir. So not, but you now your speaking is also well. You have no good knowledge about the everything, but you can't express yourself according Yes, to sir. my This is observation. the problem. This is the problem with me, and So you I can can so you understand can join everything. regularly. Definitely, you can speak now. You can Uh, join regularly these classes, then you Sir, can speak the now. biggest problem is that कि मैं सोचा थी कुछ गलत ना हो जाए, है ना? No, no, तो no, इस no, वजह not से any. अब ऐसा कुछ नहीं है. All are learner here. और हमारे मेंटर तो है ही. She is from USA. this is the very good thing here that everyone is learner, and we And all the life even I we can are in learning process, all the life we are in learning process. हम पूरे जीवन even सीखते रहते हैं। हम लोग एजुकेशन में, even एक मेरा कोटेशन है सर कि फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव, आदमी सीखता रहता है। सीखना है क्या? क्रेडल मतलब पालने से लेकर के, और ग्रेव में जब वो जाता है तो आदमी सीखता ही रहता है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। तो मुझे हम बहुत लोग अच्छा ने लगता है। एक्चुअली प्रीवियसली आई कैन से खुशी also never speak few minutes, but she has a good she has now she is speaking good. And previously I'm also not speaking. I'm also I have a hesitation कि कैसे बोलूं, गलत ना बोल दूं. Then I have यस सर। joined the practice classes regularly in before after COVID. Then now I'm a little bit speak not more and more, but according to my job I have speak very well. I can सर manage all things. वेयर आर यू डूइंग जॉब सर? I'm construction department as a admin head. नो सर, वेयर आर योर लोकेशन? Location is Jaisalmer, Rajasthan. ओके, दैट्स व्हाई वहाँ पे बहुत गर्मी गर्मी है। रहती है बहुत ज्यादा.
Yes, sir. So that's why I'm here. So Okay. so please, okay, happiness moment of your life. And also आपने राइट डाउन किया था कल जो कुछ कैप्स मैम ने बताए थे? सर मैं मेरे मतलब मेरा मैं आपको फ़ोन करना चाहती थी इवेन तो कि सर वो जो पैरा था अगर वो मुझे मिल जाता तो उसमें जो वर्ड्स मैडम ने करे थे, मेरे मन में आ रहा था कि मैं उसको लिखी पर सर ये होमवर्क कैसे करते हैं ये मुझे अभी आइडिया नहीं है कि कैसे करेंगे इसका, वो एक्चुअली पैरा कहाँ मैम का मिलेगा? जो है ना, मैम बोलते हैं कि जो मैं बताता हूँ उसको राइट डाउन करना, यू हैव राइट डाउन द सेम एंड मेक द अच्छा, सेंटेंसेस आल्सो। तो वो साथ के साथ हम लिखते चलें सर? हाँ हाँ, डेफिनेटली आई हैव राइट डाउन मेनी थिंग्स ओके, एंड तब मेनी तक मेरा वोकैबुलरी। वैसे तो बस मैंने तुरंत जॉइन किया और मतलब तुरंत सुनने बैठ गई तो फिर मैं सुनती ही रही, मैंने कुछ नहीं करा। बट आज से मैं नोटबुक और वो लेके बैठूँगी क्योंकि मैं खुद उन वर्ड्स को मे सर्च भी कर रही अगर थी। मैम अभी ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो कल तो परसों 2 दिन तो 100% करेगा, क्या कि हॉलीडे रहता है ना उधर हाँ, यूएसए हाँ में। रहता सैटरडे संडे ऑफ रहता होगा। अच्छा, कोई So नहीं, Naveen आप ji, बताइए थोड़ा सा। जी सर। can we discuss a topic? हाँ हाँ जी, टॉपिक बताइए। Surinder ji, actually current rainy season. So can you discuss regarding rainy season, Surinder ji? Or if you have Yes, any other topic, then yes, yes, yes. you can also share. Okay. Actually, this is the rainy season, but not here rainy season. It is dry season going on. अरे We had एक्चुअली to अगर, सर go to सॉरी the टू plant. इंटरप्ट, सर सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मैं ग्रुप में ऐसे अगर बात करें ना, कुछ आदमी अपोज में रहे कुछ आदमी सपोर्ट में रहता है, तब थोड़ा और मजा आएगा सर, ताकि सारे आदमी को मौका मिल जाएगा स्पीक करने के Yes, लिए। yes, Naveen ji. First of all, we will discuss one by one. Then after we will, हाँ, प्रो और कॉन्स भी आ जाएंगे उनके, क्या बेनिफिट्स है और क्या हो रहा है। yes, first of all we will discuss means one opinion. Then after we will हम्म, discuss. Please, Surinder ji, please continue. Yes, sir. Thank Hello. you. Yes, yes. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Please Hello. continue. Yes, I'm audible, sir. yes, yes. Please continue, Surinder ji. और यू आर ऑडिबल नाउ सर, प्लीज। Yes. In India, this is the rainy season going on. Many places having good rain. Actually, some at some places there are flood problem also going on in Assam and Bihar. Many people died of flood due to heavy rain. But some places are also being dry. For farmer, this is the big problem. Actually, this season is for paddy. Paddy season there for paddy, but actually no rain. Actually, we from they are started their pump set, they are drain groundwater. They started their farming. Farmer are natural dry no food. There is no. सुरेंद्र सर, यू आर नॉट ऑडिबल, योर वॉइस इज बफरिंग। This is like a game. You can is so farmers. So this is a problem, sir. Hello.
जी sir, please. You are walking now, सुन sir? पा रहे हैं सर, सुन पा सुरेंद्र रहे जी? हैं? हाँ हाँ, अब आ रहा है आवाज यस, सर। नो, हाँ रे, so farmer situation is very bad in India because there is no means, proper means for the farmers that they can start their farming. Uh, they have to depend on the nature only. So actually, this is the not good thing is going on at here for farmer. They had to spend more money in the uh, water system, for the water system, irrigation system. So its cost would be high. When farmer grown up their crop, they harvested their crop, then rate of the crop will go down. So farmer situation is very bad here going on. Rain, we are discussing on the topic rain. Actually, I think I was going out of topic. So rain is main in India. Rainy season needed for everyone. Actually, Indian economy is dependable on the farmer, and farmer is dependable on the rain only. Good, but it gets heavy rain. Due to heavy rain, there is flood also, and some problems go through. Thank you, sir. Karuna ma'am, can you say something regarding our topic, rainy season? Hello. Hello. Yes, ma'am. Please continue. On rainy season. Yes, ma'am. Uh, at present time, this is the season of rain, but there is no rain in real condition. Uh, Extreme hot weather, and no monsoon is there because of no tree, because of trees. In present situation, man cut trees, and the population of our countryside and big cities like Delhi NCR, the population grows day to day, millions. So the condition is that there is no trees, and there is no rain, and we work on sapling and grows more tree for our atmosphere. I think over. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Sorry I got late. I had Good another morning, meeting. ma'am. Good morning. Where is my Yes, favorite ma'am. student? Good morning. Just calling you. So, what are you guys reading? Actually, today we are discuss regarding rainy season. Oh, okay. Good. Yes. We discuss Okay. one So, by one. do Yes. you have anything to read? Or do you guys want me to share something? No, no, it's a own view only till now.
What is that? Actually, only till now only discuss as like group discussion rainy Okay, okay. season. Yeah. Got it. Okay, so Paper and pencil, please. let me find something to read. Okay, so sharing my screen in a second. Is there anybody who reads? Yes, ma'am. I'm asking, do you guys like reading books? So can you share my book? Any books? Does anybody like reading just any books? मीठी book लिया कोई इंग्लिश की. Novels, books, reading. That's good. So yesterday we talked to Divya. So she is very excited to learn English and she purchased a book. So yeah, so she's really trying hard and it's a very good thing that she's trying to learn. And so today we'll start with Divya. You'll start reading today and I will help you read it. Yes. Okay, 1 second. I'm not able to share my screen. Just give me 1 second. Okay, ma'am. Hello. Yeah, 1 sec. I'm just trying to share my screen. 1 second. Ma'am, can I Okay. read a book? 1 second. Okay. Okay. Can everybody see my screen? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Does anybody know Stephen Hawking? Yes, ma'am. Can you tell us about him? Ma'am, he is a scientist and he searched a theory of evolution. He says everything, one day everything, we all go in a black hole. Yes, correct, correct, correct. So okay, so we'll read a small package, small passage on Stephen William Hawking.
So, Divya, start reading. And wherever you are stuck, I'll tell you the pronunciation. Don't feel shy, don't feel anything. Just start reading whatever you can, and nobody out here will judge you. Okay? Okay. Okay. Okay, ma'am. Stephen William Hawking was in English, Stephen William Hawking was an English uh, theoretical physicist, क्या मैम? theoretical physicist, Theoretical physicist, compound, um, cosmologist, cosmonaut, author, and uh, director, director of physics research, at the can country for uh, theoretical. theoretical compound. मैम ये क्या लिखा सी ओ या यस What is that? मैम सी ओ यस एम ओ एल ओ डी ए Yes, वाई cosmology. cosmology at the University of uh, Mm-hmm. Hawking was born on January 8th. Start reading from there. was born of January 8, 1942. 1942 at an early age. He, he showed an intelligence in science and मैम ये क्या लिखा हुआ TECH Science and technology. technology Uh-huh. Although known at school, although school as mm, Einstein, Einstein Haw- Haw- Hawking, Hawking was not intelligent, uh, successful successful, academically. academically with Say, time say the word academically. Divya, say the pronounce this word. जी मैम Academically. I can't अच्छा आगे पढ़ो. with time he began to show uh, constant Considerable considerable aptitude, attitude the si- scientific. scientific subject and dis- decide Huh? decide to read mathematics and university of Very his good. Hmm. father advi- uh, Advised him advised him study medium medicine. medicine Uh-huh. and Concern consent that there were flow job for mathematics graduates. graduate. Very good. Very good. Divya, essay we'll keep reading. So next paragraph. Karuna, do you want to go with the next paragraph? Okay, ma'am. At university, Hawking was diagnosed with motor nervous disease, also known as amyotrophic lateral sclerosis (ALS) or a Lou Gehrig disease. He fell into a depression. Through his doctor's advice that he continue with his studies, he felt there was a little point. His disease progressed more slowly than doctors had
predicted. Although Hawking had difficulty walking unsupported, and his speech was almost unintelligible, unintelligible, Mm-hmm. unintelligible. Mm-hmm. In an initial diagnosis that he had only 2 years to live proved unfounded. With his doctor's advisors' encouragement, he returned to his work. Hawking started developing a reputation for brilliance and Brash. brashness, brashness when he publicly challenged the work of the noted Yorkshire ast- astronomer, Astronaut. uh, astronomer Fred Hawley and his student Jayant Nalikar at the lecture in June 1964. Hawking's works. His scientific 1 minute. His scientific work was included research on the origins and structure of the universe from the Big Bang to black holes. He revolutionized the field by being the first to set out a theory of cosmology explained by the union of the general theory of relativity and quantum mechanics. He was vigorous supporter of the many world interpretation of quantum machines mechanics success. Hawking was a fellow of Royal Society FRS, a lifetime member of Pontifical Academy of Science and uh, recipient of the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian award in the Union State in 2002. Hawking was ranked number 25 in the BBC's poll in poll of the 100 greatest um, Britons. He was the Lucian professor of mathematics at the University of Cambridge between 1979 and 1970 2009 and achieved commercial success with the work of popular science in which he discussed his own theories and cosmology in general. His book, A Brief History of Time, appeared in the British Sunday Times bestseller list, record breaking 237 weeks death. Hawking, Hawking's illness gradually paralyzed him over his decades. However, even after a loss of his speech, he was still able to communicate through a speech Generating. generating device initially through the use of hand held switch he and eventually by using a single cheek muscle. He died on 14 March 2018 at the age of 76. Excellent. Very good. Thank Everything you. you pronounced was correct, Karuna. So that was good job. So let's look at some words. जो word होता है initially and eventually.
Okay. किसी को पता है? Initially means important means The Eventually means I जरूरी think है, जरूरत, lastly. so initially मतलब होता है शुरू शुरू में, current, स्टार्टिंग currently, yes. में, Yes. एंड शुरुआत में। इवेंचुअली Uh, मतलब होता है आखिर में। lastly. हाँ, तो ये Lastly. हम यूज करते हैं कि इनिशियली एट द जॉब आई वाज enjoying it, बट इवेंचुअली द जॉब बिकेम वेरी ड्रेनिंग फॉर मी, सो इसको ऐसे यूज करते हैं। अ, अगर किसी को बीच में कोई वर्ड्स मिले तो बताना अगर मैं कुछ मिस कर देती हूँ। इंटरप्रिटेशन का मतलब समरी टाइप। हाँ, किसी चीज का मतलब इंटरप्रेट करना, किसी चीज का मतलब समझना, समझाना, निकालना किसी चीज का मतलब। जैसे साइंस के थ्रू स्टीवन हॉकिंग्स ने बहुत सारी चीजें इंटरप्रेट करी थी, मतलब बहुत सारी चीजें का आविष्कार किया था। आविष्कार तो काइंड ऑफ होता है कि लाइक दूसरा होता है, बट लाइक इंटरप्रेट मतलब किसी चीज को जोड़ करके उसका मतलब निकालना। विगरस मतलब किसी को पता है? विग्रस मतलब बोलते हैं ना विकृत या किसी बिगड़ा बात को हुआ। अच्छे से रखना। नहीं, हाँ, किसी बात को फोर्सफुली रखना, हमारा कथन नहीं, सत्य उसको। मैम नहीं। विग्रस मतलब होता है विकृत या बिगड़ा हुआ कुछ ऐसा। विगरस मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, स्ट्रॉन्ग। फुल ऑफ एनर्जी, स्ट्रांगली। यस। ओके। हाँ, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। तो इसमें ये कह रहे हैं ना, he was a vigorous supporter of many new world's interpretation of quantum mechanics, मतलब he was a strong supporter of this. Encouragement, मैम उत्साह बढ़ाना, इनकरेज प्रोत्साहित करना। करना। yes, encourage करना। Concern, किसी बात को लेके रिलेटेड, किसी बात से संबंधित कुछ बोलते हैं। किसी बात को लेके परेशान होना। हाँ। ओके, नेक्स्ट वाला मैं शेयर करती हूँ। डिसाइड करते हैं कौन जा रहा है नेक्स्ट। Me. आर्यन, ये गुड जॉब। चलो आर्यन, इसके बाद सबको मतलब भी आप समझाओगे इसका, क्योंकि मुझे पता है आप कर सकते हो। चलो स्टार्ट हो जाओ। ये एक पैसेज है कि जब कि हम सबको पता है ना कि कभी भी ड्राइव करते हुए फोन नहीं यूज करना चाहिए, उसी के ऊपर है ये एक पैसेज। सिंपल सा पैसेज है, बट हम इसमें से कुछ वर्ड्स मिलेंगे। तो आर्यन शुरू हो जाओ। In the United States, 96% of people own a mobile phone. Increased reliance on cell phone had led to rise in the number of people who use them while driving. There are two dangers with driving using a cell phone. First, drivers must take their eyes off the road while using the phone. Second, people can become so absor- absorbed in their conversation or texting that their ability to concentrate on the act of driving is severely impaired. Since the first law banning handheld cell phone use while driving was passed in New York in 19 no in 2001. There has been No, debating 2001। 2001, sorry. हम्म There has been debated as to the exact nature and degree of hazard. At first, safety experts focused on the problem as the part of the
larger one of driver distraction. In general, these can include anything that reduce driver concentration on road hazards such as drinking coffee, playing with the audio system, or talking with another passenger. Hmm. Now, there is increasing evidence that the danger associated with cell phone using outweighs those of other distraction. Safety experts also know, acknowledge that the hazard possessed by cell phone use is not eliminated and may be increased by the use of hand-free sets. The distraction of cell phone and other wireless devices, dialing, listening, talking, or texting is second only to daydreaming has a cause for fatal car crashes. 1 in 10 people has been involved in a car crash where at least one driver was distracted. There is no way to safety use a cell way to there is no way to use a cell phone and pay attention to the road simultaneously. Simultaneously. Simultaneously, both are thinking tasks, and human beings cannot concentrate equally on thinking tasks. The idea that people can multitask is a myth. Where are you? Many Many. studies have shown that using handset phones while Handheld. driving can constitute a hazardous distraction. What about a hand-free phone? Studies shown the use of free assets may be worse. According to the National Safety Council, drivers in the middle of a cell phone Conversation. con- conversi- Hmm. conversation can miss up to 50% of what happening around them, including pedestri- pedestrians and billboards or other roadside features. Cell phone play an integral role in a society. However, the consequences they offer Con- must be judged convenience. convenience Hmm. against the hazard they pose. The number of state leg- Legislatures. legislatures debating measuring that uh, address the problem of cell phone use while driving continue to rise. Currently, 19 states ban the use of hand cell phone and 48 states ban and Texting. texting while driving. Teen drivers has even stricter laws to follow. The USA is not the only country with laws about cell phone use while driving. Has 30 other countries restrict or prohibit the use of driving and dialing with pen, pen, penalties that include fines, loss of the driver's license, another and or jail time. Excellent. Very good. ओके, अब पेनल्टीज का मीनिंग कौन बताएगा? पेनल्टीज मतलब कुछ चार्ज लेते हैं ना That's अगर like जब fine, आपने fine. गलत फाइन फाइन या फाइन पड़ता है जब
प्रोहिबिट का मतलब बंद कर देना। जब किसी चीज को एकदम बंद कर दो, मना कर दो। बैन रिस्ट्रिक्ट करना। का मतलब मतलब सेम ही है, सेम ही रिस्ट्रिक्ट है। मैम नहीं, रिस्ट्रिक्ट वहाँ पे किसी नहीं चीज कर को सकते। रेस्ट्रिक्ट मना करना। तो रिस्ट्रिक्ट मतलब मैम होता है कि किसी चीज को मना करना, और प्रोहिबिट मतलब किसी चीज को बंद कर देना, मतलब वो अलाउड ही नहीं है। अगर कोई चीज प्रोहिबिटेड है तो इसका मतलब कि अगर तुम वो काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर फाइन पड़ेगा। लेकिन अगर कोई चीज रिस्ट्रिक्टेड होती है तो इसका मतलब है कि उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो लीगल नहीं है, लॉ नहीं है। तो पहला स्टेज होता है रिस्ट्रिक्ट करते हैं, फिर हम उस चीज को प्रोहिबिट करते हैं। और सब लोग इन वर्ड्स का नोट ले लेना, स्पेशली दिव्या। जो भी वर्ड्स हम लोग सीखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन वर्ड्स को लिखें और रोज रिवाइज करें। तो जो यहाँ पे क्लास ले रहा है ऐसे ही करे। अच्छा, हजार्ड्स मतलब मैम डिजास्टर तबाही, जोन। डिजास्टर। हाँ। हजार्ड्स मतलब मैम हजार्ड जो मतलब बिना कोई रिस्क होती है, रिस्क या डेंजर होता है हजार्ड। तो ये बोल रहे हैं however the convenience they offer must be judged against the hazards they pose। जैसे अगर अभी आजकल अगर सबने एक वर्ड सुना हो सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी, तो क्या होता है जैसे कि हम लोग कोयला जलाते हैं, लेकिन और उसके अलावा हम जैसे बहुत सारे हमारे वुल और ये चीजें होती है जिसकी पेपर बनता है, तो हम पेपर कहाँ से लाते हैं, हम पेड़ काट के पेपर बनाते हैं ना। तो कटिंग ट्रीज इज अ हजार्ड फॉर नेचर, बिकॉज उससे रिस्क पैदा हो रही है। अगर हम सारे पेड़ काट देंगे तो फिर हम ऑक्सीजन किस चीज से लेंगे? सो कटिंग ट्रीज इज अ हजार्ड टू द एनवायरमेंट, ऐसे यूज करेंगे, इट्स अ रिस्क, सो दैट इज हजार्ड। देखो जैसे यहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि using cell phones while driving can constitute a hazardous distraction। इस लाइन का मतलब कौन समझाएगा? हैंड हेल्ड फोन इस्तेमाल करते हुए और ड्राइविंग करते हुए हजार्ड्स हो सकते हैं। रिस्क हो सकता है मतलब। रिस्क हो सकता है। हाँ, वेरी गुड। सो हमने कुछ नए शब्द सीखे। मल्टीटास्क का मतलब मैम एक साथ एक साथ बहुत बहुत सारे टास्क, टास्क करना। बहुत टास्क। मल्टीटास्क, हाँ, एक साथ जब हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। बहुमुखी। डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट हो जाना किसी चीज से। हाँ ध्यान हट जाना। हाँ, जब हमारा कंसंट्रेशन भटक जाता है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फेटल मतलब फ्रेंड मैम नहीं, सेटल मीन्स आई हार्मफुल। जानलेवा। हार्मफुल। जानलेवा एक्सीडेंट्स होते हैं ना, फेटल कार क्रैशेस। तो ये बोल रहे हैं कि जो लोग टेक्सटिंग और कॉलिंग करते हैं इस पे फोन पे बात करते करते, वो क्या होता है, वो हजार्डस होता है व्यक्ति के लिए। मैं जो फेटल मतलब डेथ हो जाना भी होता है ना, फेटल हाँ, कितने एक्चुअली, फेटल वही होता है कि लाइक जैसे फेटल बोलते हैं ना नंबर ऑफ कभी, फेटल, हाँ डेथ मतलब कितने डेथ हो गए, हाँ, फेटल नंबर ऑफ जानलेवा फेटल। डेथ, करेक्ट। जैसे कहते हैं ना कि दिस एक्सीडेंट वाज फेटल, मतलब कि डेथ हुई है इस एक्सीडेंट में, जानलेवा। एक्नॉलेज एक्नॉलेज मतलब मैम सर जानकारी, किसी का कंसर्न, जैसे मैंने कोई गलती की है और तो फिर उसका मैंने ध्यान में उसको लेना एक तरह से। एक्नॉलेज किया है, मतलब ध्यान मैंने में अपनी लेना, गलती मान ली है, हाँ करेक्ट। तो वो होता है एक्नॉलेज। एलिमिनेटेड, एक्सेप्टेंस भी होती है। सो देखो दो चीजें होती हैं। अक्नॉलेज मतलब होता है कि हाँ मैंने उस चीज को मान लिया है। एक्सेप्ट मतलब कि मैंने उस चीज को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोनों में हल्का सा डिफरेंस होता है। पर अक्नॉलेज जैसे कि तुम्हारे पास मैसेज आता है, तुमने देख लिया है और तुमने ओके भेज दिया है, वो अक्नॉलेज है।
तो तुम वहां पे यूज करोगे। एक्नॉलेज कहाँ पे यूज होता है सबसे ज्यादा, कि जैसे तुम्हें कोई ईमेल कर रहा है, तुम्हें कोई मैसेज कर रहा है, तो तुम Yes, yes. बोलते हो ओके एक्नॉलेज, मतलब मैंने मैसेज देख लिया है। एक्सेप्टेड मतलब क्या होगा, कि मतलब वो चीज जैसे मतलब कोई जैसे मैं मेल करता हूँ तो हम लोग लिखते हैं ना कि एक्नॉलेज कॉपी, प्लीज शेयर यस, द एक्नॉलेज करेक्ट कॉपीज। करेक्ट, हाँ। तो वो होता है एक्नॉलेज की मतलब, हाँ हाँ, आंसर आपके करेंगे कि ध्यान हाँ में मुझे, आ गया कि मैंने ये भी कि साइन करेक्ट, करके भेज दो चाहे। हाँ और कुछ बस। ये भी होते हैं मैम, जैसे बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसका भी एक्नॉलेजमेंट टाइप में एक्नॉलेज देते हैं। हाँ, हम्म, एक्नॉलेजमेंट हम लोगों को वो मिलता रिसिप्ट। है, एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट मिलती है ना हम लोगों को, वो यस होता है। यस यस, लाइक कैश डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट। यस। एविडेंस, एविडेंस तो एविडेंस मतलब एविडेंस। सबूत। गवाह। सबूत सबूत, हाँ गुड। मैम वो एलिमिनेटेड क्या बता रहे थे उसका मैम हाँ प्रीवियसली? एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड का मतलब पता है किसी को? रिमूव, रिमूव कर देना किसी चीज को, हाँ एलिमिनेट कर रिमूव देना। कर देना। निकाल देना। जैसे वो देखा है जब हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि मिस इंडिया मिसेस इंडिया के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो एक एक करके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एलिमिनेट होते रहते हैं, मतलब बाहर होते रहते हैं। वो होता अच्छा है, अच्छा भाई, बिल्कुल ही खत्म कर देना, एलिमिनेटेड हाँ मतलब समाप्त, एलिमिनेट इज टोटल ओवर, एलिमिनेटेड खत्म। माने डिस्क्वालिफाइड। हाँ एलिमिनेटेड। डिस्क्वालिफाइड कह सकते हैं, करेक्ट। तो हमने सीखा, हमने ये मतलब इन सब सारे वर्ड से मैचिंग ही है। प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट, प्रोहिबिट, एलिमिनेट, सब कुछ एक जैसे ही वर्ड्स हैं, बस उनका यूज थोड़ा थोड़ा अलग है। लेकिन रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, कि उस चीज को रोकना। प्रोहिबिट मतलब कि वो चीज बंद कर देना। बंद कर एलिमिनेट देना, करना कि वो चीज हट गई है, मतलब वो चीज हटा बाहर देना। हो गई। हाँ, तो ये तीन वर्ड थोड़े एक जैसे हैं। आ, और कौन से वर्ड्स हैं? अब्सॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब किसी चीज को समझना, एब्जॉर्ब करना। हाँ जैसे जो जैसे जो रुई होती है वो पानी अब्सॉर्ब करती है। सोख लेना, सोख कर लेना किसी चीज को। सोख लेना। ग्रहण, ग्रहण करना। हाँ हम्म, हाँ, अब्सॉर्ब मतलब जैसे हम कहते हैं कि बाहर जैसे यूएस में ऐसे बोलते हैं, ओ आई एम गोइंग आउट टू अब्सॉर्ब सम सनलाइट, मतलब कि हम थोड़ी धूप ग्रहण जो भी वो वर्ड होता है वो करने के लिए जा रहे हैं, मतलब ग्रहण करना। अब्सॉर्ब। हाँ। अच्छा, रिलायंस मतलब एक हमारी कंपनी भी है रिलायंस, किसी को पता है हम्म, रिलायंस का मतलब? जी। मैम, सेलफोन की डिमांड बढ़ गई। नहीं, रिलायंस मतलब कि जब हम किसी पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, जैसे आर्यन आप अपने पापा पे रिलायंट हैं, वो होता है रिलायंट। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, increased reliance on cell phones has led to a rise in the number of people who use them while driving। कह रहे हैं कि जो इंक्रीज डिपेंडेंसी है फोन पे, उसकी वजह से जो नंबर ऑफ लोग हैं जो फोन यूज करते हैं ड्राइविंग के टाइम, वो बढ़ रहा है। तो हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम लोग बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं फोन से। तो रिलायंस, रिलायंस का मतलब यही होता है जब हम किसी चीज पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। भरोसा कर लेना किसी पे, भरोसा depend। भरोसा थोड़ा सा अलग होगा। रिलाय जैसे रिलायबल, रिलायबल, रिलायंट, रिलायंस, ये चीज होती है। बट दोनों मतलब कह सकते हैं एक दूसरे वर्ड्स की जगह, बट उसका तो मेन मतलब है कि हम उस पर निर्भर हो सकते हैं। डिपेंड हाँ, रिलायंस, होना। डिपेंडेंस होना। Dependency। हाँ एज करेक्ट। लाइक हैबिचुएटेड यस, मीन्स। जैसे जैसे अब हम लोग सर डिपेंडेंस है, जैसे अब जैसे यूज कोई नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड्स है कि वो चलेगा तभी काम कर पाएंगे। वी आर करेक्ट। डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क। हम्म, राइट। ओके, सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। खुशी, आर यू रेडी? यस मैम। ओके, शेयरिंग माय स्क्रीन। Aryan is also know about the ma'am Stephen Hawkins. He is also purchased recently Theory of Oh, Everything. nice. Aryan, you will make us all proud one day. You're already making us proud.
is very good. Like at 8 years, 9 years of age, Aryan has a very good pronunciation. He knows so many words. There's just so much to learn from him. So you're doing a very good job, Aryan. Okay, Khushi, you can start. Yes, ma'am. Video game ratings. Video and computer games are popular among people of all ages. About 67% of Americans plays video games on at least one device, including video game consoles, computers, tablets, or smartphones. Children play video games on average about 2 hours a day. The content of today's video and computer games varies widely. Games have information about the content that can help buyers and players decide whether a particular game is suitable for purchasing, downloading, or playing for free online. The Entertainment Software Rating Board maintains a two-part rating system for video and computer games. First is the later rating system, LRAM. The later suggested the game's age appropriateness. Second are the content descriptor, such as intense violence, which point out specific elements of game that have caused the rating and that may be concern. Players can change the content of rated game by downloading software from the internet onto their computers. Ma'am, please scroll. Yeah, sorry. Your This program called mods can make a game's content more explicit than the rating indicates. This in turn could make the game inappropriate for players like kids and teens. Games related AO adult only have content that is suitable only for people 18 and older. These games may include prolonged scenes of intense violence and or graphic sexual content and nudity. Games rated M mature have content that may be suitable for people over 17 and may contain instant violence, blood and gore, sexual content, and strong language. Game rated T teen have content that may be suitable kids over 13. They may contain violence, suggestive themes, crude humor, minimal minimal blood, and the use of strong language. Games related E10 plus, every 10 and older, have content that may be suitable for kids at least 10. This game may be this game may contain more cartoon, fantasy or mild violence, mild language and or minimum suggestive themes, and teens. E everyone rating is found on games that have content that may be suitable for kids at least 6 years of age. Games rated EC early childhood are intended for preschoolers who are at least 3 years old. The game with EC rating contain no material that parents would find inappropriate. Very good. Excellent. um Inappropriate का मतलब? अ, बोलते हैं कि ये चीज़ एप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब आई थिंक भरपूर सेंस में एक आता है ना, भरपूर नहीं है। इनअप्रोप्रिएट मतलब कोई चीज गलत, कोई चीज अनएक्सेप्टेबल, मतलब जैसे कोई तुम्हें टच कर दे, इनअप्रोप्रिएट, या कोई तुम्हें अच्छे शब्द नहीं बोल रहा है, इनअप्रोप्रिएट। तो जो जो भी कोई जैसे खराब चीज होती है, जो किसी को भी बुरा फील कराए, वो इनअप्रोप्रिएट होती है। सजेस्ट, सजेस्ट मतलब मैम कोई सलाह चीज देना, मैम। सलाह देना। सलाह देना।
uh, humor, सेंस ऑफ ह्यूमर सुना है? किस कहते हैं कि वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत हाँ, अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ, तो वही उस shit, एक सेकंड। हाँ, मिनिमल मतलब ये पता है? मजाकिया हो गई तो होता है। मैम बहुत बहुत कम। हाँ, वेरी गुड। तो हमेशा कहते हैं ना ये एक मिनिमलिस्टिक। अगर अच्छा, मिनिमल। तो सबने रतन टाटा का नाम सुना है यस या अजीम प्रेमजी? सो हमेशा we always say that Ratan Tata is minimalistic. We always say Azim Premji is minimalistic. इसका मिनिमलिस्टिक मतलब वो होता है कि वो इंसान जो साधारण जिंदगी जीता है, कि मतलब कम से अजीम कम। प्रेम कम से कम, हाँ एग्जैक्टली, कि ना उसको सबसे महंगी गाड़ी चाहिए होती है। तो रतन टाटा आज की डेट में इतने फेमस क्यों हैं? तो वो इतना पैसा होने के बाद भी वो जो है He जेन्युइनली, lives a very simple life. यस, तो ये बहुत बहुत अच्छा वर्ड है। लेमैन वायलेंस भी का बोल सकते हैं मैम। हाँ, लेमैन, लेमैन भी तो बोल सकते हैं, माने मतलब साधारण लाइफ जीने वाला लेमैन। मतलब लेमैन भी हाँ मतलब कह सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। लेमैन जो है ना चलिए। वो उस चीज में आता है, जैसे लेमैन हम कब यूज करते हैं कि जब कोई, जैसे कि तुमने एक नई जॉब स्टार्ट की, ठीक है, और तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस नहीं है, कि तुम नॉन एक्सपर्ट हो, वो होता है लेमैन। कि तुम्हारे पास, कि तुम नए हो उस जॉब में, लेमैन बोलते हैं, ले पर्सन बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस चीज से। ओके। लेमैन तुम्हारी स्किल से रिलेटेड होता है और मिनिमलिस्टिक तुम्हारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होता है। अच्छा, वायलेंस का मतलब तो पता ही होगा सबको। मैम मार देना भी है ना। अहिंसा। लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गन। एक्सप्लिसिट मतलब, ये तो सुना होगा सबने, जब हम मूवी देखने जाते हैं कितनी बार हम देखते हैं कि बोलते हैं कि दिस दिस कंटेंट इज एक्सप्लिसिट। मैम अच्छा नहीं होना नहीं, चाहिए। मतलब एक्सप्लिसिट मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो है। एक्सप्लिसिट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि मतलब हम बस सीधे सीधे बता देते हैं। एक्सप्लिसिट होना, कहते हैं कि ना, बी एक्सप्लिसिट अबाउट समथिंग, मतलब कि बी डायरेक्ट अबाउट इट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट इट, बातें घुमा फिरा के मत मैंने करो। स्पष्ट स्पष्ट बताना, हाँ, खाने एक्सप्लिसिट में रख मतलब दो। स्ट्रेट हाँ? फॉरवर्ड। एग्जैक्ट बताना। नहीं खाना। यस। जा चॉकलेट खा ले लेके। अच्छा, अप्रोप्रिएटनेस। चॉकलेट। क्या गलत है? और भी अप्रोप्रिएटनेस, चॉकलेट आप कह रही थी। मैम मैम ये मान लेना। एप्रोप्रिएट से ही रिलेटेड है। हाँ, एप्रोप्रिएटनेस एप्रोप्रिएट से ही रिलेटेड है, अनुकूलता। यस 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 यस। परचेजिंग मतलब, खरीदना, मैम खरीदना। परचेज करना। गुड। ओके, आई थिंक इतने ही वर्ड हैं। टाइम फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ। Who's reading next? फिर मैं उसी हिसाब से ढूंढूंगी इजी डिफिकल्ट। मैम मैं तो स्पीक नहीं कर पा रहा हूँ, आर्यन को ही करवा दीजिए मेरे खाते में। नवीन, आप क्यों नहीं कर रहे हो रीड? काउंट कर रहा हूँ मैम सारे सेंटेंसेस को। हाँ, मैं राइटिंग कर रहा हूँ मैम, जो आप बोल रहे अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और किसने नहीं पढ़ा है? खुशी का हो गया। हेलो। अ, पं, पंकज आपको पढ़ना है या वरना फिर आर्यन पढ़ेंगे? Ma'am, someone is joining and you must please continue from. This is a new student. Yeah. So, Pankaj, you haven't read. Do you want to read? Please start. Yes, ma'am.
Surprise guests. Every fall, when it starts getting cold outside, many people have visitors. These visitors are not friends or family members. They rarely enter homes without being invited inside. These unwelcome guests often arrive just in time for uh, Halloween. They even dress for the occasion. They wear a coat of orange with black dots and appear to have an armor like shell. Asian lady beetles are a mixed blessing. They are an effective natural control for harmful plant pests such as aphids, Aphids. scale and others. Adult lady beetles eat 90 to 270 aphids per day. Yet their tendency to overwinter in homes and buildings, often in large numbers, makes them a nuisance. Lady beetles do not cause great harm. Unlike termites and carpenter ants, they are not structure damaging pests. Lady beetles do not chew or burn holes in walls or eat carpet Or furniture. or furniture. They do not lay their eggs in homes. If aerated or squashed, the beetles may, Beetles. may beetles may exhibit a defensive reaction known as reflex bleeding. A yellow fluid with an unpleasant odor is released from leg joints. This reaction often prevents predators such as birds from eating lady beetle. The fluid may stain walls and fabrics. Asian lady beetles have become a problem in some regions of the US. It is Probable. probable that their introduction into new habit areas of the US feed these lady beetles from some natural population checks and balances that occur within their native Asian range. It is likely that these natural controls will catch up to the lady beetles in time. This will decrease their booming population. Asian lady beetles are attracted to lighter colors, whites, greys, yellows. Light colored houses might serve as homing beacons. Once the lady beetles enter the walls of a home through cracks or crevices, they may or may not proceed to the interior. Most stay in the wall spaces in their search for an exit from wall spaces. Lady beetles may enter living areas. Warmer temperatures or lighting in the living areas may attract these active beetles as they search for an exit. Preventing the lady beetles from entering is the best approach to keeping them from becoming a household nuisance in fall and winter. Clocking exterior cracks and crevices before the ladybugs seek overwintering sites is the best way to keep them out. This will also keep out other unwanted insects, reduce such as wasp, and will save homeowners money and energy costs. Sweeping and vacuuming are effective methods for removing these lady beetles from living areas. Using insecticides indoors for control of the lady beetle is not typically recommended unless the infestation is very heavy and professional pest control advice should be sought. Okay, perfect. So we are almost on time. Can we discuss the birds या फिर Ma'am, next class में करें?
Ma'am, in the last class, you told about the Halloween festival, Yes. and this is related. In the last class, you talked about the Halloween festival in USA, and this is related to the Halloween fest. No? Yes, yes. Quite a lot. Quite a lot of words are from the same thing. It's good that you remember it. Good job. Okay, so we are at time. I know a lot of people have to drop off. So let's discuss the words tomorrow. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. All right. Then I will see you guys again tomorrow morning. Okay, thank you, ma'am. Okay. Okay, Thank ma'am. you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.